Yes, hello everyone. Good morning, all. Now tell me, am I audible or not? Okay. Oh, then fine. So till this time we have done the set theory 1 lecture, and now in continuation we will do the next lecture, which is related to the some of the laws uh, in set theory. So one is the commutative law. So what is commutative law? If you can write down A union B, this can be written as B union A also, and they both are equal. Okay. Next one, if you can write down A intersection B, then it is equal to B intersection A with the help of commutative law, right? One, if you write down A XOR B, then it can be written as B XOR A in case of commutative law. Or this XOR is also known as क्या बोलते हैं इसको XOR को सिमेट्रिक डिफरेंस और बुलियन सम, राइट? एक्सोर को और क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस और बुलियन सम भी बोला जाता है इसको. नेक्स्ट, so this is about the commutative law. Next we will see the associative law. So what is associative law? So associative law mainly discuss about the parenthesis, where you can put the parenthesis. So here it is A union B union C. So here we are putting the parenthesis firstly. It means we are doing B union C firstly. After that we'll perform union with A. And here what we are doing here, performing the A union B firstly. After that we are performing union with C. So they both are equal according to the associative law. Next, I think you all are familiar with these laws. So मैं ज़्यादा डिटेल में एग्जांपल लेके ऐसे नहीं कर रहा. I think you all are familiar. So next is A intersection B intersection C. So okay, किसी का अनम्यूट हो रखा है, म्यूट करें प्लीज. So it is A intersection B intersection C. A intersection B intersection C. So here we are using the parenthesis, means firstly we'll perform this one, after that we'll perform intersection with A. And in this one we are performing the intersection with AB, after that we'll perform intersection with C, means they both are equal according to the associative law. Next one is it is A XOR B and B XOR C. So firstly we'll XOR this we'll perform this operation, after that we'll perform with A. And in this one firstly we are performing between A and B, and after that we'll perform with C. So they both are equal according to the associative law, right? Next one, distributed law. Distributed law means if it is A union B intersection C, then you can distribute this one. So A union B means it is A union B, in between intersection is there, you write down intersection as it is, then A union C. So you can do the distribute the union over intersection. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर द इंटरसेक्शन. And here you can do the you can distribute the intersection over the union. How? If it is A intersection B union C, then you can say firstly it is A intersection B, after that it is in between union means union, after that A intersection C, sorry, A intersection, it should be intersection, yes, it is A intersection C. So this is what a distributed law. Next is a idempotent law. Idempotent law means if it is A union A which is equal to A, or if it is a B intersection B, it is equal to B. If we think about Boolean algebra in digital logic, तो उसमें क्या लिख सकते हैं इसको, यूनियन इज लाइक ए प्लस, सो वी कैन से A प्लस A विच इज इक्वल टू A. ए के इक्विवेलेंट होता है, या फिर नंबर पुट करके देख लो, उससे भी पता चल जाएगा. अदरवाइज बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी मीन्स बी and B. B and B means it is equal to
बी। सो अगर डिजिटल के फॉर्मेट में देखें तो भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो दिस इज व्हाट नॉन एज आइडम पोटेंट लो। तो इसको आइडम पोटेंट लो बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज डी मॉर्गन्स लॉ। So what is a De Morgan's law? If it is A union B, A union B, then it is a complement. Then it can be written as A complement intersection B complement. ऐसा ही होता है ना, अगर डिजिटल फॉर्मेट में देखें तो क्या होगा, डिजिटल में ऐसा ही होता है ना, A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या कह सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, और प्लस को क्या कर दिया जाएगा, एंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी था ना, इट इज बी। तो इसको फर्दर क्या कह सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वही यहाँ पे आ रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इफ इट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो क्या कर दिया जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स यूनियन। ठीक है, तो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, if it is a minus b union c, this can be written as firstly a minus b, after that you will use union, and after that again a minus c. So this is also De Morgan's law. What about next one, it is a minus b intersection c. A minus B intersection C means firstly it is A minus B, after that you will use intersection, so A minus B then intersection, after that again it is A minus C. So this is what A minus C, and finally this is also De Morgan's law. Got it? Okay, next one. Next one is absorption law. Absorption law means it is A union B, A intersection B. If it is A union A intersection B, which is equivalent to A. How it is equivalent to A? Let's understand in the digital format. So if it is A plus A, or let me say in same format, if it is A intersection B, is there anything common? No, it means 5 will be there. Nothing is common. And what about A union? And A union 5 equal to A. So finally this is equal to A. What about this one? Okay, firstly, what is the common between, this can be written as A intersection and this one. So ये कुछ ऐसे होगा ना कि either I can take A or either I can take B. तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन की बात करें तो A ही कॉमन आ रहा है, इट मीन्स दिस इज व्हाट द रिजल्ट। सो फाइनली दिस इज व्हाट absorption law. Next law is what, modular law. Modular law means if it is A union B intersection C, this can be written as A union B intersection C. जैसे एसोसिएटिव लॉ में हो रहा था, पैरेंथेसिस को जस्ट चेंज किया जा रहा है। ठीक है, सो इफ इट इज A union B, तो क्या किया जा सकता है, इट इज A union then B intersection C will perform. Next, if it is A intersection B union C, then firstly it is A, then intersection, then we'll perform B union C. This is what a modular law. And another thing, you don't need to remember this law. If you can remember, or then it is fine. But ऐसा नहीं है कि आपको रटाफिकेशन करना पड़ेगा. Definitely you can tell these properties by the that Venn diagrams. ठीक है, सो वेन डायग्राम्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप इन प्रॉपर्टीज को बता सकते हो कि ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि दिस इज गिवन टू दिस इज इक्वल टू दिस वन, इज दिस करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज दैट डायग्राम्स और वेन डायग्राम यू कैन सी। लेट अस अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल। Okay, till this part it is clear or not? Firstly tell me. Okay, clear. I think it is simple. These are the some of the properties. So this portion is simple. Let me rub this one.
Okay, so assume it is A union B complement है, A union B complement which is equal to A complement intersection B complement. This one is given, and it will ask that it is a true or not. They both are equivalent or not. So how we can verify? We can verify using the Venn diagram. So let me take a set A and another set B. This is what is set A, this is what set B, and this one is union. And I will write down the number for the regions. So let me say this region is 1, this region is 2, and this region is 3, and this region is 4. So I have written all the regions. Now next we'll have to verify this one is valid or not. This one is valid or not. How to verify? So firstly I will see A union B complement. A union B complement is nothing but a universal minus A union B. ऐसा ही होगा ना, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होगा ना कि यूनिवर्सल में से क्या कर दो, A यूनियन B को माइनस कर दो, है ना. सो व्हाट आई कैन से, यूनिवर्सल क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हो गया ना, दिस रीजन दिस रीजन दिस रीजन एंड दिस रीजन, ऑल द रीजन. सो वी कैन से it is a 1 2 3 and 4, and out of that we'll subtract A union B. What is A union B? Tell me the area for A union B. Yes, ये जो numbers, yes, okay, someone is saying 2 3 and 4. Yeah, definitely it is 2 3 and 4. This is the region for A union B. So it is subtracting A union B. A union B means it is 2 3 and 4. 2 3 and 4. Okay, so if we subtract this one, what will happen? Common part is cancel out, common part cancel out, and what is remaining inside this one? It is a 1. So finally result of this one is 1. Okay, it is fine. What about next one? This is A complement intersection B complement. So A complement, what we can say? What will be the part of A complement? Yes, tell me. What will be the numbers inside this set? और regions number क्या होंगे complement के केस में? A complement. Okay, Ekta is saying it is 1 and 4. Okay, 1 4. So portion of A is this one, and complement means other than this portion. Other than this portion means 2 और 3 नहीं आएंगे, इसके अलावा जो भी होगा वो आएगा. So it is 1 and 4. So 1 and 4. And what about next one? It is intersection. So you use intersection here. What about B complement? B complement means B वाला पार्ट नहीं आएगा, तो क्या आएगा? B में 3 है और 4 है, इसको छोड़ के बाकी सब पार्ट. So I will take 1 and 2. So here it is 1 and 2. Finally what will be the result? It is a common part. We'll have to take common part because of intersection. So what is the common part? 1 is here and 1 is here also. So we'll take this one as a result. So this is what a 1. So what we can say, this is what a left hand side, and this is what a right hand side. And finally we can observe that a left hand side equal to right hand side. Finally what we can say, they both are equal. So this is what a equal. Got it? Yes, I got it or not? Okay, then fine. Oh, let us see a next example.
Okay, in the next one, it is given as A union B intersection C. A union B intersection C. This one. A union B intersection C, which is equivalent to A union B intersection A union C. A union B intersection A union C. Okay, according to the property, we know that they both are equal. But according to the Venn diagram, how we will prove this one? Yes, try for this one. लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा नंबर्स के अकॉर्डिंग, राइट हैंड साइड में क्या आएगा नंबर्स के अकॉर्डिंग, एंड फाइनली व्हाट वी विल कंक्लूड. Okay, firstly tell me how many that circle I will use here. कितने सर्कल मेरे को लेने पड़ेंगे यहाँ पे. हाँ, so simple, it is 3 circles. And let me write down the regions also. This one is 1, this is what 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are the regions written. Then you find out what will be the result of left hand side and what will be the result of right hand side. You find out this one. ओके, किसी ने अनम्यूट कर रखा है. रिस्पॉन्स करने के बाद म्यूट कर दिया करो उसको, डिस्टरबेंस हो रहा है. Okay, so you can match that one. Let me solve. So what it is given in left hand side, it is A union B intersection C is given. It is A union B intersection C is given. So A union B intersection C is given. So what is A? What is the region for A? Region for A, let me say this is what A, this is B and this is what C. So region for A is what? It is 2, 3, 6 and 5. So region for A is 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5 and 6. After that there is a union given. I will write down union. After that a B intersection C. So tell me what is a B? B means it is a 3, 4, 6 and 7. 3, 4, 6, 7. Okay. After that union of intersection of this one. Intersection with the C. What is it, the region for C? Region for C is it is a 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Okay. Now we can solve. So this is what intersection given. Intersection means I will check for the common part. What is the common part? 3 not common, 4 not common, 6 common. What about 7? 7 also common. So result is 6, 7. Result for this one is 6, 7. Or in between it is union given, and this is what 2, 3, 5 and 6. Then what will be the union of this one? Union of this one is a 2, 3, 5, 2, 3, 5,
and after that 6 common between these two, so one time I will take, and after that 7 also given, so this one, this is what a left hand side. Now I will check for right hand side. Side, it is 2 3 and 5 is given, 2 3 5 6 7. Okay, what is left hand side, right hand, ये क्या कर लिया, left hand side calculate कर ली. Now we'll check for right hand side. So it is a union B. A union B means A. What is a? A means it is a 2 3 5 6. 2 3 5 6. B means it is 3 4 6 and 7. Union B. B means, let me write down like this one. It is a B. B means 3 4 6 and 7. 3 4 6 7. Okay. Then in between intersection is given. So I will write down intersection. After that A union C. So what is for A? Region for A is a 2 3 5 and 6. 2 3 5 and 6. After that union C. Union C. So I will take union here and C. What is the C? C means it is a 5 6 7 8. 5 6 7 8. And finally what should be the result? So this is what union of these two is what? It is a 2 3 2 3, okay, 5 and 6, 5 6, 2 3 5 6, 4 also given, let me take 4 also, and 7 also given, let me take 7 also. So this is what union. Intersection, union of these two also. Union of these two is what? 2 3 and 5. 2 3 5, and let me say 6 also, and after 6 it is 7 and 8. 7 and 8. And now finally calculate the intersection of these two. What will be the intersection of these two? So common part 2 here, yes, available, means 2. What about 3? 3 also available, so I will take 3 also. What about next 5? 5 available, I will take 5 also. Next the 6 available in both, I will take 6 also. Okay, 6 also. What about next? 4 is given. No. What about 7? Yes, 7 is available in both. I will take that one. 7 also. What about 8? Not common. So this is what finally result. So result is what? It is 2, 3, 5, 6 and 7. Now check that this is what right hand side. Now check that right hand side equal to left hand side or not. Okay, so it is a 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, they both are equal. Finally what we can say, we can conclude that they both are equal. ठीक है, तो ये वाली तो जस्ट प्रॉपर्टी दे रखी थी. आपको प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और दे दिया जाए फिर भी पूछ सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे, तो हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू. ठीक है, तो रिमेंबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि ये प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा, ऐसा सीन नहीं रहेगा. 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7. Yes, Priya, you are correct. Okay. Okay, let's see next question. I think it is clear to all. आसानी था, सबका हो गया होगा आई थिंक. Yes or not? Okay, clear. Fine.
Okay, next a question is given, which of the following is not true? Which of following is not true? So first one, that is a minus b, which is equal to b. A minus b equal to b. A minus b, a minus a minus b. Let me say this one, a minus b, which is equal to b. Second one, a minus b, which is equal to a intersection b. A minus a minus b equal to a intersection b. C. It is a intersection b union a intersection b complement. A intersection b, a intersection b union a intersection b complement, union a intersection b complement, and which is equal to a. And next one is a b intersection a union b. B intersection a union b, which is equal to b. Yes. Now tell me, out of these, which of following is not true? Not true बताना है, true वाला नहीं, not true. या फिर ऐसे बता दो, this one is true and this one is false. Yes, try to solve this question. Okay, Ekta is saying A is false. Okay, A false. Okay, मुझे ये बताओ B false है या true है, ऐसे बताना है. First false, second one is true. Okay. D also true. Pushpa is saying D true. Okay. And what about C? C, C is saying false. C false. Okay. Let me solve this one. After that, you check it out. You match that one, that it is correct or not. So here, how many variables are given? It is 1 and 2, A and B. So I will take two set A and B, A and B, and this is what union, and I will write down the regions. So it is 2 and third and fourth region. Okay. Now I will take the left hand side and right hand side and verify that one. So let me take first A. So it is A minus B. So A is what? A means 2 and 3. So it is 2, 3. Okay. Then minus, after that A minus B. So I will take A firstly. A means 2 and 3. 2, 3, and minus B. B means it is 3 and 4. 3, 4. So from left hand side I have written everything. So finally what I can say?
this one minus we want to perform, so cancel out the common part and I will take this one. So this one is 2 minus, what about this one, 2 and 3. So common part cancel out, so 3 is remaining. So finally what is the result? 3. So in the left hand side what is given? This is what left hand side. Let me check for right hand side. Right hand side equal to b, और b का मतलब क्या हो गया? b equal to what? It is 3 and 4. b का मतलब 3 and 4 हुआ. Okay, so b means 3 and 4. This is what right hand side. Is they both are equal? No, they both are not equal. So finally what we can say? This a part is what? False. This one is false. Okay, let's see next. B. B. So it is a minus B. A minus B already I have calculated. A minus B result is 3. ठीक है? So a minus B इसका मतलब result क्या रहेगा? 3 which is equal to left hand side. Right hand side मेरे को calculate करना है. Right hand side is what? It is A intersection B. So what is A? A is 2, 3. Okay, then intersection. Okay, B. B is what? 3 and 4. And what is the common one? So common is 3. So what we can say? 3 is common and this is what right hand side. ठीक है? So left hand side equal to right hand side, they both are equal. It means this is what? True. और ये क्या रहेगा? False. Okay, so what about next one? Let us see next one. और okay, ये दो समझ आ गए होंगे ना? ओके, कहाँ पे 2? ये वाला 2. हाँ, तो इस 2 में ये कह रहा है ना कि दिस इज वर्ट 2 and 3 एंड फ्रॉम दिस वन कॉमन पार्ट तो कैंसिल आउट कर दिया. सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सेट डिफरेंस. सो कॉमन को तो कैंसिल आउट कर देंगे और ए में जो बच गया वो मैं ले लूंगा. ए में क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है ना, तो 2 रख लेंगे यहाँ पे. क्लियर? हाँ, जस्ट सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, सेट डिफरेंस किया है यहाँ पे. सो ए एंड बी पार्ट हम कर चुके हैं, सी पार्ट देखते हैं. Okay, in C part it is given A intersection B. A intersection B. A intersection B means what region? So intersection कह रहा है ना A और B का intersection. We can say this one, this region. डायरेक्टली भी पता चल रहा है ना, दिस रीजन A इंटरसेक्शन B. अगर आपको एक्सप्लेन करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते थे कि 2 A का मतलब क्या हो गया? A मीन्स 2 3 2 3 एंड इसके बीच में क्या है? इंटरसेक्शन. और इंटरसेक्शन किसका? बी के साथ. बी क्या है? 3 and 4. इट इज 3 4. फाइनली व्हाट विल बी द कॉमन पार्ट? 3. सो रिजल्ट क्या आ गया? 3. ये रिजल्ट डायरेक्टली भी दिखने से पता चल रहा है. ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है ना, तो इसका इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है? ये वाला ना, तो इसका मतलब रीजन नंबर 3 आएगा. ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ऐसे. ओके, नेक्स्ट इज यूनियन. तो ये 3 आ गया मेरे पास. उसके बाद क्या बोल रहा है? इसका यूनियन करना है. यूनियन कर देंगे. सो यूनियन के बाद क्या बोल रहा है कि A इंटरसेक्शन B एंड देन इट्स ए कॉम्प्लीमेंट. सो A इंटरसेक्शन B क्या रहेगा? A इंटरसेक्शन B इज दिस पार्ट. और उसके बाद क्या कह रहा है? इसका कॉम्प्लीमेंट करना है. इसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ? अदर देन दिस पार्ट. अदर देन दिस पार्ट मीन्स क्या आ जाएगा? इट इज 1 2 and 4.
1 2 एंड 4, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, अभी अभी निकाला है, दैट इज 3। 3 का मतलब दिस पार्ट, इस पार्ट को छोड़ के अदर जो भी आएगा इट इज 1 2 एंड 3। इसका मतलब ये 1 2 एंड क्या था 4 ना, हाँ 4। देन विल हैव टू परफॉर्म यूनियन बिटवीन दीज टू। यूनियन अगर इसका करेंगे तो क्या आएगा, इट इज 1 2 4 और 3 ऑल्सो, सो 1 2 3 एंड 4। दिस इज व्हाट है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ विल चेक राइट हैंड साइड ऑल्सो। ओके, नीरज कह रहा है कि 4 कहाँ गया, कौन से वाले में से 4? ओके, ये वाला 4 कहाँ चला गया, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों में से मेरे को कॉमन पार्ट लेना है। कॉमन पार्ट इज दिस वन, अगर यही 4 बताया है तो। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में 1 नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 नहीं आएगा, यू कैन वेरीफाई दैट वन, चेक कर लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दिया हो, बट आई थिंक सही था। कुछ मिस्टेक हुआ है तो चेक कर लेना। आपको प्रोसीजर पता है, क्या रहेगा प्रोसीजर, राइट? कंटिन्यू करते हैं, मैंने वो रब कर दिया था उसको, देख लेना, अदरवाइज आई विल टेल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज 1 2 3 एंड 4 विच इज लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देन व्हाट इज राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड क्या बोला इसने, विच इज इक्वल टू ए, एंड व्हाट इज ए? ए का मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू दिस वन 2 एंड 3। A means 2 3 which is equal to right hand side. And can you tell me left hand side equal to right hand side? No, left hand side and right hand side, they both are not equal, means they are different. So finally what we can say, they both are not equal, and this is what, false. So this one is false. What about next one? समझ आ गया ना, आई थिंक? Okay, then continue. Next is D. So B intersection A union B. What is a B? B we can say it is 3 and 4. 3, 4. Okay, after that intersection, and after that A union B. What will be the A union B? What is a? A union B, we can say this one, directly लिख सकते हैं 2 3 and 4, A union B 2 3 4, directly we can write down. And what is the common part here? Intersection है ना, इसका मतलब common check करना है, common is 3, common part is 3, इसका मतलब क्या हो गया, result 3. Okay, this is what left hand side. And now we'll check right hand side. Right hand side means B, or B means it is 3 and 4. Okay, 4 also common, yes, 4 also common, so I will take 4 also. And right hand side में क्या है, B. B का मतलब क्या हो गया, B can be written as 3 and 4, 3 and 4. So finally this is what a right hand side. And right hand side, left hand side, they both are equal, so what I can say, it is true. So D is true. Okay, then it is clear to all. Yes, 4 भी तो कॉमन है, हो गया नीरज, 4 कॉमन मैंने देख लिया. Okay, clear, then fine. Let's move to next one.
Okay, then let's see next question. Which of the following is not true? Which of the following is not true? Let me solve this question also. After that, you will solve finally third question. ठीक है, that will be homework. So second question और मैं solve कर देता हूँ. Which of the following is not true? Which of the following is not true? ठीक है. So which of the following is not true? First one, A. This is what A. If A is proper subset of B, then B complement, okay, A is a proper subset of B, then A complement is a proper subset of B complement. A complement is proper subset of B complement. Next one. Second one is B. A intersection power set of A. A intersection power set of A, which is equal to 5. Next one. C. A intersection power set of A equal to A. A intersection power set of A equal to A. And next option D. So option D is what it is, a power set of A intersection, power set of A intersection, power set of A, power set of A, power set of A, which is equal to this one. Yeah, out of these four options, which one is false, which one is true? ठीक है, तो हम देख लेते हैं false और true दोनों ही देख लेते हैं कौन सा रहेगा. Yes, solve this one. और what will be the Venn diagram, वो आपको सोचना है. इसके लिए Venn diagram क्या बनेगा? सेट के केस में Venn diagram ही बोलते हैं ना, आई थिंक इसको. मोनिका मैम, मैथमेटिक्स ऐसा ही बोलते हैं ना. Okay, then solve this question. मैथमेटिक्स मेरा इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश है आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए. Oh, thank you, Harmit. Okay, Mukesh is saying B is false, C is true. B false. Okay, let me write down B false and C is true. C true. Okay, B false, C true. Monica is saying C is true, rest of all false. Anu is saying B false. Okay, so you can match with my answer.
Okay, let me solve. What type diagram will be there? So a diagram, it should be like this one. This is what A, this is what B. Why? Because this one is saying that A is a proper subset of B. So A is a proper subset of B. Let me say. Then first one is what A is a proper subset of B. Let me write down the regions also. Let us say, let me say this is 1, this is 2, and this one is 3. 1, 2, and 3. Okay. Then what is the A? A means this one A. A का region क्या रहेगा? Region for A is 1, which is proper subset of B. B का region क्या रहेगा? 2. B का region क्या रहेगा? 2. और 1 and 2 है ना, दोनों ही होने चाहिए, 1 and 2. So 1 is proper subset of B. Yes, this one. 1 is a proper subset of this one. Yes. Okay. Then A complement is proper subset of B complement. A complement is what? A complement is other than this one. Other than this one means 2 and 3. So 2 and 3. This is what complement. This should be the proper subset of B complement. What is a B complement? B complement means other than B. Other than B means 1 and 2. Iske other than this one. So this is what 3. Okay. Now tell me that this one is a proper subset of this one or not? Is it correct or false? Yes. So this one is a 2 and 3. This is not a proper subset of this one. Let me say this is what B and this is A. So A is not a proper subset of B. Or let me say this is what A complement and this is what B complement. So what we can say, this A complement is not a proper subset of B complement. So finally what we can say this is what false. ठीक है, तो ये क्या रहेगा? false रहेगा. Next one, what it is saying in next question? It is saying A intersection power set of A equal to 5. Let me take example. A equal to, assume AB. Then what will be the power set of A? Power set of A, it is equal to this one. Let me say 5. ऐसा बोल सकते हैं क्या? It is 5A B, 5AB and A comma B. This is what power set of A. Now it is saying the intersection of these two is 5. Okay, can you tell me what will be the intersection of these two? इन दोनों का intersection क्या रहेगा? What is the common part in these two? यूनिवर्सल का ये प्रॉपर सबसेट नहीं है इन फर्स्ट क्वेश्चन. यूनिवर्सल का प्रॉपर सबसेट कहाँ बोला था हमने तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर सबसेट देखना था ना.
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अदर देन ए का पार्ट ये है ना, तो अदर देन ए क्या होगा, 2 और 3, तो 2 और 3 हो गया। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, अदर देन बी, बी पार्ट में क्या क्या है, 1 और 2, ये दोनों बी में ही है ना, सो 1 और 2, अदर देन बी मेरे को लेके चलना है, दिस इज व्हाट 3, तो ये 3 आ गया। तो क्या इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, नहीं। ओके, गॉट इट, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन इन दिस वन, बताना मुझे। Poonam is saying AB is common. Poonam, AB is not common. Here A and B are two elements. Here A and B are two elements, and here this A and B is what, a single element. ये एक element है यहाँ पे इसका, और यहाँ पे ये दो element हैं. So they both are not equal. इनको equal नहीं बोलेंगे. Okay. Other than these, what we can say? Anything is common? Yes. Tell me, common or not? No. So if there is nothing common between these two, so what we can say, result of these two is what, 5. And यही तो क्वेश्चन में बोला है, which is equal to 5, ऐसा ही होगा ना। So A intersection power set of A which is equal to 5, yes it is equal to 5. So what we can say, this is what, true. Got it or not? Yes, it is clear to all. Okay, okay, let's see next question. It is a C, sorry, C part. So what is there in C part? C part, okay. C part, it is saying A intersection power set of A which is equal to A, which is wrong. Already we have calculated this one. और हमने देखा था it is equivalent to 5, right? तो ये equal क्या था, 5 के equal था, because there is nothing common. और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, it is equal to A, इसका मतलब क्या हो गया, this is what, false. तो ये true किसने बताया था, उसका रिजल्ट गलत रहेगा. So this is what, false. What about next one, power set of A intersection power set of A. Okay, मैंने रब कर दिया, उसको फिर से लिखना पड़ेगा. Let me take set A equal to AB. Then what is the power set of A? Power set of A equal to 5. That is A is B and A comma B. This is what a power set of A. After that, we'll take the power set of A. Again take the power set of A, power set of A, which is equal to 5 this one, which is equal to 5 and this one, and after that it is A, then B. ठीक है, ये तो क्या हो गया, 0 लेंथ, और ये क्या हो गया, 1 लेंथ 1 लेंथ 1 लेंथ. ठीक है, और 1 मोर 1 लेंथ है, अड़े से, और ये कर लेंगे, है ना. दिस वन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस वन, एंड सो ऑन. बाकी की स्टोरी इनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दैट इज 1 लेंथ, आफ्टर दैट 2 लेंथ, आफ्टर दैट 3 लेंथ 4 लेंथ. सो वो कॉम्बिनेशंस बनेंगे. बट पूछ क्या रहा है, विच इज इक्वल टू दिस वन. हाँ, सो देर इज a कॉमन पार्ट दिस वन और नॉट in the both. Yes,
पावर सेट और पावर सेट में मेरे को 5 कॉमन मिल रहा है ना, और यहाँ पे इस वाले में भी क्या मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, इस पावर सेट और पावर सेट के लिए पाए, और इस वाले में भी क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मेरे को, एम आई करेक्ट और नॉट? ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे को क्या मिल रहा है, इक्वल टू दिस वन, सो फाइनली दिस इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट और नॉट? ओके, नहीं भी करेक्ट है तो चेक कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which is given as which of the following is not true, true or false, let me say which one is a true and false, ये बताना है। a, let us say a minus b minus c, a minus b minus c, a minus b minus c is equal to a minus b minus c. Second one, a minus b minus c, a minus b minus c, which is equal to a minus c minus b minus c, a minus c minus b minus c. Next one, let us say ax or b union, sorry, ax or b b union c, ax or b union c is equal to ax or b union ax or c, ax or b union ax or c. And next the d is a minus b union c, a minus b union c, a minus b union c equal to a minus b intersection a minus c, a minus b intersection a minus c is, out of these which one is a correct one, or true or false, true or false निकालना है। चलो मैंने लिख दिया है, सॉल्व कर ही लेते हैं अभी, एक बार ट्राई करो। yes, try for this one। yes, everything is fine, am I audible?
Okay, then try for this question. कौन से वाले में? हाँ, बस parenthesis का difference. Okay, it is a minus c minus b. Yes, yes, it is a minus c minus b. This one is given a minus c minus b. Now check for this one. Yes. Okay, Ekta is saying a is true. Let me write down. It is true. Okay, B also true. A is true. B also true. Yes. What about C and D? Option C and D. Yeah, 3 or 4 candidates are solving questions. What about others? They are not solving. Okay, Poonam is saying D is true. Let me write down D is true.
Anu is saying D is false. Monica saying A, B and D are true. A, B and D are true. Okay, A, B and D are true. ऐसा तो हो चुका है. Yes. It means what about C? C is false or true? C का पता नहीं चल रहा शायद. Okay, let me tell C. ठीक है, मैं सारे ही सॉल्व कर देता हूँ एक बार के लिए, कंफर्म हो जाएगा. What about A minus B minus C? Let us see the left hand side. This one. So firstly I will take A minus B. What is A minus B? A minus B means the portion in which B is not included. So what is the portion in which B is not included? 2 and 5. This portion. This is the A ना. Sorry, A minus B हो जाएगा ये वाला portion 2 and 5. So 2, 5. ये क्या हो गया? A minus B minus C. Minus C का मतलब ये वाला. C क्या है? C is this one. C is 5, 6, 7, 8 है. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 and 8. So what is the common? Common part is this one. It means फाइनली रिजल्ट में क्या आ गया मेरे पास? जो इस सेट में बच गया वो वाला रिजल्ट होगा. दैट इज 2. What about a right hand side? Let us see the right hand side. So firstly I will check for this one, A minus C. What is A minus C? A minus C means I will take the portion of A. I will not take anything from C. So from A I can take this one 2 and 3. I will not take anything. 5 and 6 is from C. I will not take that one. So A minus C means it is 2 and 3. This is what A minus C. Now I will take minus and after that I will take B. What is a B? B means 3, 4, 6 and 7. It is 3, 4, 6 and 7. So what is the common part? Common part is this one. Cancel out this one. What is the remaining in this set? 2. So finally result is 2 and this is what left hand side, this is what right hand side, they both are equal. So I can say that this is what true. So this one is true. What about next one? Second part, it is a B. Let me solve that part also. So A minus B minus C, ये तो दे रखा है ऑलरेडी, मैंने निकाल दी इसकी वैल्यू. A minus B minus C which is equal to 2. Let me find out the right hand side for second number or option number B. So it is A minus C minus B minus C. What is A minus C? Firstly A minus C. A minus C means I will take the part of A. I will not take anything from C. So A means this one 2 and 3. I will not take anything from C. So 2, 3. 2, 3. Okay. After that I will take minus and B minus C. What is a B minus C? I will take everything from B and not from C. So B means this one 3 and 4 and this is what part of C also. So I will not take this one 6 and 7. So I will take only 3 and 4. So 3 and 4. Now perform the subtraction. What is the subtraction operation? This one. Cancel out. So what is the remaining in this set? It is a 2. So this is what the result. So 2 is the result. So this is what right hand side. And this is what left hand side. And they both are equal. If left hand side and right hand side they both are equal, what I can say? This is also true. So this is also true. Okay, law के according शायद C is also true. We'll check that one. Okay, so second भी confirm हो गया. What about C? C से पहले मैं D देख लेता हूँ, उसके बाद C करते हैं. D. It is A minus B union C. A. What is A? Let me take a left hand side. So A. A means 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5 and 6. This is what A. Minus B union C. What is a B union C? This one.
B union C. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. This one. Okay. And finally what we'll do? We'll subtract. So common part cancel out. This one, 5, 6. Anything remaining in this one? So aim x just a minute. Okay, C लेना था क्या? Oh, sorry, forget. Let me write down once again. So what we'll take? We'll take the B union C. Okay, this is B, this one is C. These two. So it is a 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Yes, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This one. Now cancel out. Let me write down again. That is a 2, 3, 5 and 6. Yes, now cancel out. 3 we can cancel out. Yes. What about 5? Yes. What about 6? Yes, we can. So finally what we got in this set? It is a sorry, 2. So we got 2 from this set. Now I'll check the right hand side. Right hand side is what? A minus B. What is a minus B? Let me write down. A minus B means I will take the part of A, not a part of B. So A means it is a 2 and a 5. So 3 and 6 I will not take. So 2 and 5. What about a next intersection, and after that A minus C. A minus C means I will take the part of A, not from C. So A means 2 and 3. 2 and 3. And what is the common part? Common part is this one because of intersection. So common part is 2. So finally result for this one is also 2. And this is what a left hand side, and sorry, this is the right hand side, and this is what a left hand side, and they both are equal. If they both are equal, it means this is also true. ठीक है. Finally अपने को क्या करना है? That XOR operation, or we can say क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिक डिफरेंस और बूलियन सम. ठीक है. एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस या बूलियन सम क्या होता है वो देखते हैं. इफ आई टेक दिस डायग्राम, this is what A, this is what B. Then symmetric difference meant I will not take the common part. I will not take the common. XOR में ऐसा ही होता है ना, जब 0 0 होती है तो रिजल्ट क्या होता है? फॉल्स होता है. और जब 0 1 होगा या डिफरेंस वाला होगा तो वो क्या होता है? रिजल्ट ट्रू होता है. इसका मतलब कॉमन कॉमन जब भी आएगा तो रिजल्ट क्या होता है? फॉल्स होता है. इसका मतलब मुझे यहाँ पे कॉमन पार्ट नहीं लेना है. कॉमन पार्ट नहीं लेना है तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का मतलब क्या हो गया? इसको डिनोट कैसे करते हैं? A सिमेट्रिक डिफरेंस B विच इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, ये पोर्शन क्या होगा? इट इज A माइनस B, बिकॉज B का पोर्शन नहीं है यहाँ पे, ये A है ना. सो दिस वन इज A माइनस B यूनियन B माइनस A. दिस पोर्शन इज B माइनस A. ये वाला पोर्शन B माइनस A है, ये वाला पोर्शन क्या है? दिस इज A माइनस B, राइट. सो दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सिमेट्रिक डिफरेंस. और फर्दर इसको क्या कहा जा सकता है? अगर मैं इसको क्या बोलूं कि इसको A यूनियन B बोल दूं और उसमें से मैं क्या कर दूं? इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस कर दूं, देन आल्सो द सेम थिंग विल हैपन. सो व्हाट वी कैन से, और A symmetric difference B which is equal to that A union B minus A intersection B, this one. And this is another formula to find out the symmetric difference. You got this point? ओके, रिपीट करता हूँ. मैंने कहा सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है?
जैसे एक्सओर ऑपरेशन क्या होता था एक्चुअल में, 0 0 जब होता था रिजल्ट क्या आता था उसका 0, 0 का मतलब फॉल्स, और 0 1 जब भी होगा रिजल्ट क्या आएगा 1, 1 0 जब भी होगा रिजल्ट क्या आता था 1, और 1 1 जब भी होगा मतलब सेम होंगे तब क्या होगा रिजल्ट फॉल्स आएगा, इसका मतलब फॉल्स है, और इसका मतलब क्या है ट्रू है, और ये फॉल्स है। तो ये ट्रू किस केस में होगा, जब 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, मतलब कॉमन पार्ट वहां पे कुछ भी नहीं होगा इन दोनों के बीच में, ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तभी क्या आएगा ट्रू आएगा, है ना। तो जब कॉमन कुछ भी नहीं है देन इट विल बी ट्रू। तो क्या कह सकते हैं फर्दर, यहाँ पे कॉमन पार्ट मेरे को नहीं लेके चलना है ना, तो यहाँ पे कॉमन पार्ट नहीं आएगा, कॉमन पार्ट नहीं आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट ए माइनस बी, दिस पोर्शन इज ए माइनस बी एंड दिस पोर्शन इज बी माइनस ए, और इन दोनों को क्या कर देंगे यूनियन कर देंगे, तो फाइनली मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस दिस कैन बी अंडरस्टैंड दैट इट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी टोटल रहेगा ना, ये टोटल ए यूनियन बी, इसमें से ये पार्ट हटा देना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या कर दिया माइनस कर दिया, दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट सिमेट्रिक डिफरेंस। गोट इट और नॉट, गोट इट, ठीक है। देन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। So what is the left hand side? Left hand side means this is A XOR B union C. Let me write down A. What is A? A means 2, 3, 5 and 6. A means 2, 3, 5 and 6. Okay, after that XOR. Let me write down XOR operation or symmetric difference, and after that B union C. What is a B union C? B is this one, C is this one, and take all the part 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, तो ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और इसका एक्सओर अगर परफॉर्म करेंगे या सिमेट्रिक डिफरेंस परफॉर्म करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को क्या नहीं लेके चलना, कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ऐसा ही होगा ना, क्या करना पड़ेगा, कॉमन पार्ट अपने को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अदर देन कॉमन पार्ट वी कैन से, कॉमन पार्ट क्या रहेगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये 5 और ये 5 और ये 6 और ये 6 और ये 3 और ये 3, है ना। सो अदर देन दिस वन क्या बच गया, 2 4 7 8, 2 4 7 8, हाँ। सो कॉमन पार्ट क्या हो जाता है, उसमें से सारे पार्ट में से कॉमन पार्ट को क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो फाइनली क्या बच गया मेरे पास, यहाँ से 2 और यहाँ से 4 7 एंड 8, सो इट इज 2 4 7 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट दिस वन, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अच्छा ये तो दूसरे वाला था, ये वाला a एक्सोर b यूनियन a एक्सोर c। तो a एक्सोर b ये क्या रहेगा,